हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे एंड यू नो दिस आई एम फराज जाहिद एंड वेलकम बैक टू रिएक्शन टीवी। गाइस, आज मैं जिस वीडियो पर अभी रिएक्ट करने वाला हूँ आप लोगों को एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही मज़ेदार और एक दिलचस्प और एक खूबसूरत तरीन जगह है, शहर है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर इज़ ए सिटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी इंडियन स्टेट है एक राजस्थान, जो आप सबको पता होगा। उसकी मतलब वहाँ पर एक शहर है और मेट्रोपोलिस है, काफ़ी बड़ा शहर है जिसकी मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, सीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ देखने वाली, और इसको मेरे ख्याल से द सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा पता है ना चीज़ों के बारे में। तो मुझे काफ़ी देर से कुछ दोस्त हैं जो कह रहे थे कि इसके ऊपर रिएक्ट करें, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला जो होता है मुझे होता है कि यार मुझे वीडियोस का नहीं पता कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। मैं अक्सर फिर वो उठा लेता हूँ कि जो ज़्यादा व्यूज़ वाली हो, और कुछ लोग कहते हैं कि यार वो बहुत पुरानी है, आप उस पर क्यों रिएक्ट कर रहे हो, नई वीडियो पे रिएक्ट करो। तो फिर मैं कहता हूँ कि मुझे शेयर कर दें लिंक। तो अभी ये एक दोस्त हैं जिन्होंने ये शेयर किया हुआ था लिंक, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्ट किया जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मेरा ख्याल है कि हमें रिएक्शन को शुरू करना चाहिए। बस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, कोई मसला नहीं। लेट्स स्टार्ट। Traveling in India is inherently chaotic, but the best way to get around It's too all loud. that chaos is a tuk-tuk. Tuk-tuk. वाओ, उदयपुर राजस्थान। शुरू में बहुत ब्यूटीफुल गेट, किस तरह शाहाना लग रहा है ना, राजा राजा वाली फीलिंग आ रही है। ब्यूटीफुल यार, ये डर नहीं लगता पानी के अंदर जगह है वो। Good morning, Vagabuddies. Welcome back to Rajasthan. Rajasthan. Right now we are in the city of Udaipur. Udaipur, known as the city of the lakes, surrounded by lakes. ब्यूटीफुल यार। And, this morning, अच्छा, मैंने कहना ये था we started things off with a little कि bit of chai. शुरू में जो Chai कलाम है ना, here. आई नो दैट And कलाम we नुसरत have a फतेह खान ने very पढ़ा हुआ, काफ़ी मशहूर interesting कलाम है। day planned. I will let Marco bring you all अरे up to भैया, I mean, I'd rather just let you guys see it as it unfolds. So we're gonna go first things first to the lake around which the entire city. अकेले अकेले चाय पिए जा रहे हैं यार ये लोग। mustache. Okay. यही मुस्टैच हो, राजपूत वाला स्टाइल ना, मोड़ा हुआ है। The truth is that I first got. Excuse me. The truth is that I first grew a mustache when I was here 9 years ago in Rajasthan, and the locals told me I just had a little baby mustache, just like Alex's little baby mustache, and I started pulling it. They're like, just pull the edges, and they showed me it will eventually curl into what it is now. So Mark has been pulling himself for the last 10 years. No, last 30. And it looks like it's finally starting to get there. You will see the transformation will be complete as I continue on this journey through Rajasthan. I will become a Maharaja beard mustache man. अबे गोरो, तुम लोगों को क्या पता। ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत सिंपल सादा और अच्छे लोग लग रहे हैं देखने में। Traveling in India is inherently chaotic, but the best way to get around all that chaos is a tuk-tuk. Hello. They kind of just swerve around and get through any gap. Not like there are really any rules of the road here in India. It's just kind of like go. यहाँ पर भी यही हिसाब है, जहाँ दिल करता जा रहे होते हैं, खासतौर पर लोकल जो अंदर शहरों के अंदर जो सड़कें हैं वहाँ पर, मतलब मोहल्ले के अंदर जो जगह होती है खसूसन। वाह जी वाह। Well, the first destination of the day is the city palace here in Udaipur. Udaipur is known as the White City, as you can see. I can see. A lot of buildings are painted white. Like many other cities in Rajasthan, it was once ruled by its own Maharaja, the Maharaja of Udaipur. So this is his palace, and we are going to go inside. हिस्टोरिकल वैल्यू भी फिर है ना इस जगह की बहुत ज़्यादा। मैंने बाकी सिटीज़ तो नहीं देखी अभी राजस्थान की, लेकिन मैंने देखनी है, तो मुझे ज़रूर लिंक शेयर कर दीजिए अगर आपकी तरह। Honestly, this is like got some of the best souvenir shopping in all the world. The original bohemian style came from people who would travel to the east and bring back cool stuff. And this is literally like an emporium of awesome things. There's
There's leather bags, there's like textiles, there's cool rugs. It's really cool. The mustache? Yes. Oh. See, some people appreciate the mustache out here. He has a mustache though. I got one too, but मैंने कटवा लिया यार. You looks Rajasthani now. Yeah. There we are. Thank you, man. Can't play. जबरदस्त यार. अंकल जी अखबार पढ़ रहे हैं. आप इसको क्या बोलते हो? हम इसको लच्छे बोलते थे. लच्छे छोटे होते, लच्छे वाला भाई. Ladies and gentlemen, a monumental discovery has been made. I think I've finally solved the eternal question of what happened to Tupac Shakur. He is here. Tupac Shakur. And there is proof. I figured it out. There he is. Tupac Shakur didn't go to Jamaica. He came here to Rajasthan, to India, to live out the rest of his days as a Raj, which is not a bad call. ये किसी के साथ मिला रहा है? ओए वाह जी, स्वैग है भाई का. I'm really loving it यार. So this is a cage to trap tigers and trap panthers in that one over there. All these gates are big enough to let an elephant pass through because historically elephants were like the tanks of Indian armies. They were heavy lifting materials, they could carry things and they could ram doors. So you see the gates right here actually have spikes on them, which was a defensive measure to stop elephants from charging and hitting the gates with their heads. Beautiful. यार हिस्टोरिकल चीज़ों की एक अपनी अट्रैक्शन होती है ना. और फिर पीछे जो म्यूजिक वगैरह चल रहा है और वो एक मंत्रा सा जो पढ़ रहे हैं, एक अलग ही वो क्या उसको बोलते हैं, एक फील आ रही है. Now we're inside the City Palace complex at Udaipur. This is one of the most magnificent buildings in all of Rajasthan, and it is the largest palace in the state. It was the capital of the Mewar Kingdom. If you remember, we said Rajasthan means बाद में 1947 के बाद ये राजस्थान हिस्सा बन गया. independent kingdoms throughout this whole land. And this was one of them. The Mewars were a warrior tribe. They fought off foreign invaders, most notably in a battle with Akbar. Akbar was from the Mughal Empire, and they were invading from around Afghanistan area. This palace complex was built before that invasion because the local Maharaja had been walking through this area and found a hermit who suggested that he change his capital here. It's actually a really good defensive location because it's surrounded by mountains and it's right on this lake. So it made it hard for foreign invaders to come in. Although they did lose the battle to Akbar and became vassals of that empire and later the British, you can see that this building fuses Mughal, Arabic, Muslim architecture with Rajasthani styles. Beautiful. जबरदस्त शॉट है यार. कितनी प्यारी शॉट लिया खिड़की से, नहीं जब ऐसे करके बाहर निकाला उसने. All right, well, our tour through the city palace continues. Right now we're kind of like up at the top. This is where the Maharaja used to kind of hang out, take in the view. Extremely crowded nowadays. This is a very popular tourist site here in Udaipur, but it's easy to see why. जबरदस्त यार. देखिए कितना काम हुआ है, मतलब दीवारों पर, छतों पर जो खिड़कियां बनाई हैं वो. So this is the peacock. This is the royal bird of Rajasthan, and you can see why. Because the Maharajas, they definitely peacocked with their style. They would go very, ostentatious and Colors. flagrant, and it's a really good style. But much like the peacock, they like to strut the stuff.
something that continues to happen to us here in India. It's pretty funny. People would just walk up to you and ask for a selfie, or in our case, we were just sitting on the bench and they just sat down in between us and they demanded a photo. But then again, I think that Carlos brought up a good point that it's kind of like karma because we travel around and take photos of people. Travel around के बच्चे लोग इज्जत दे रहे हैं, इज्जत रास नहीं है इन्हें. You know, it's only fair that. What can we not? Can we say no? I mean, we'd be. मतलब What are we? लोग आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, खिंचवा लो सेल्फी. Floating around on Facebook with a bunch of total strangers and smiling faces and doing the double peace sign. What the hell यार, अजीबोगरीब सोच है इनकी. मतलब कोई बंदा मुझे आके कहे कि यार आपके साथ सेल्फी खिंचवानी कुछ करनी है, आपको महसूस होगा कि यार अगला बंदा आपको इज्जत दे रहा है. हैट्स ऑफ टू देम, वैसे इनकी सोच पर. हाय हाय राजस्थानी खाने. कोफ्ता यहाँ पे भी होता है, चिकन मसाला, गार्लिक नान, सारे खाने यहाँ पे होते हैं यार. ये मतलब इस भिंडी भी होती है, ओकरा. Yeah, Bindi. I know all the Hindi I know is the menu. मतलब they are not bad people, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिनमें भाई मेरा इख्तलाफ है इनसे. Alright, you guys, we are in the middle of the VR shoot and we've stumbled upon a cow in the middle of this alleyway. The local ladies are blessing it. They're giving it a puja, which is a prayer or a blessing. And Marco is feeding the cow. डर नहीं लगता सींग से. ये बड़ी प्यारी जगह पर है, लेकिन मुझे डर भी लगता है यार पानी के अंदर इस तरह. I just gotta say, this whole trip is making me super nostalgic of being here 9 years ago. And it's like so different because when I came here, I had 1 month of time. I had just finished college. I just finished working for 4 months in Mumbai. And I had a month of free time just with no plans. And that is really the way to travel India. This is one of the most beautiful places I've ever been in all of my travels. Oh, indeed. Which is why we decided to come back here to film these VR videos in Rajasthan. I'm just blown away by how different these two places are. Like, this is my first time in India. This is like the 3rd day that I've been in India. My first experience was Jaipur, the capital of Rajasthan, which is much drier, it's bigger, it's louder, it's a little bit more chaotic, but coming to Udaipur was just such a surprise. It's lush and jungly, and there's this beautiful lake, there's multiple lakes in 6 या 7 lakes हैं ना. And it's just way more mellow and slow, and it's been a very pleasant surprise. I have to say, if I had to choose between the two, Udaipur is the clear winner for me. पानी वाली जगह पर साफ सफाई इस कदर रखना, I mean कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी एक सरदर्दी है. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू देम, जो भी मतलब मेंटेन कर रहा है इन चीज़ों को, रख रहा है. गवर्नमेंट है, वो लोग भी ख्याल कर रहे होंगे. फिर मतलब इट लुक्स ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है. और चमगादड़ है ना, बैट. Okay, well, next stop is this museum, Bangor Haveli. Haveli. It's right next to the lake here in Udaipur, and there's going to be like a bunch of traditional dances and traditional music, and it should be pretty interesting. So let's go check it out. कल्चरल डांस फॉर्म. लवली यार, मतलब कि इनका अपना फोक डांस हो गया, कल्चरल डांस है. बहुत अच्छा लगता है ना अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करना.
ये जो बीट है ना टिपिकल राजस्थानी, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में। इंडियन म्यूज़िक से मतलब मूवीज़ और इंडियन जो रियलिटी शोज़ हैं म्यूज़िक के। Beautiful Well, ladies. that's the end of the show. These are the very talented dancers. They did such an incredible job tonight. Thank you. Thank you. You want me to sit there? Okay, well, it's been an incredible day in Udaipur, just hanging with the dancers. You guys did such a great job. Thank you so much for the entertainment. Yeah. His name Rekha. Yes. Rekha, Bhagwati. Priyanka. Hello. Sima. Hi. Priyanka, Seema. Cool. Can I give you guys Jeevan high Das. fives? High five. अच्छा, इनका ये अपना भी कोई मतलब इनका फेस पे उन्होंने भी किया हुआ था वो जो मेल थे Well, ना। that was an incredible way to finish an awesome day. Udaipur, by far my favorite place so far on this trip. So much to see, so little time. Every day here is like an eternity, but those dancers were incredible. Yeah, such amazing beauty, the way that they were like presenting themselves. I think it's a really cool insight into the Raika tribe. That was the Raika tribe and their traditions. But we'll see more of them at Pushkar So Temple. tribes are Going there related. next, or later in the week. Anyways, we're sticking around Udaipur tomorrow. We're going to do some more fun stuff before continuing our journey through Rajasthan. So stay tuned, and if you like this video, give it a thumbs up, share with your travel buddies. इनके वीडियो को भी subscribe और to Vagabond's अपनी वीडियो को भी। notifications so you can get all the rest of the videos from this series. And in the meantime, remember to stay curious, keep exploring, and we'll see you on the road tomorrow in Rajasthan. Okay, dude, I hear you. केसरिया पालम, यही कहते हैं ना वो, पधारो पधारो मारे देश। मतलब कि इनका राजस्थान से रिलेटेड जो बातें चीज़ें हैं हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। मतलब इंडियन जो टेलीविज़न है वो हो गया, इंडियन मूवीज़ हो गई, और मतलब वो क्या बताऊँ मैं आपको, राजा महाराजाओं की जो चीज़ें बातें हैं, मतलब उसका जब भी जिक्र आता है तो साथ राजस्थान का जिक्र आता है, राजपूत का जब जिक्र आता है तो उनके बारे में काफ़ी सुना हुआ है पहले, थोड़ा बहुत उनके म्यूज़िक के बारे में थोड़ा कल्चर के बारे में भी पता था, बहुत कम। तो मैं एक वक्त था कि मैं समझता था कि ये ना राजस्थान जो बहुत रेगिस्तानी सा इलाका है, मतलब जिस तरह हमारे यहाँ थर वगैरह का इलाका है ना उस तरह। तो यार यहाँ पे तो मैंने अभी उदयपुर देखा है तो ये तो लेक्स से भरा पड़ा है, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई 5 या 7 लेक्स हैं, और बहुत साफ़ सुथरी वेल मेंटेन्ड जगह है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा गया है। आप लोगों ने देखा ही है कि वो किस तरह मज़े से फिर रहे थे यार, यहाँ पे अपना हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और आई वॉज रियली अमेज्ड बाय दिस वीडियो। इसके अंदर आप जो सिंपल लोग घूम फिर रहे थे आप उनको देखें, और इसकी जो जगह की जो बिल्डिंग्स थी उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू को देखें, उसके बाद जो इसमें नेचुरल जो फैक्टर आ रहा है चीज़ों का वो देखें आप। तो हर लिहाज से बड़ी खूबसूरत जगह है और इसकी एक वैल्यू है। उसके बाद में इसमें काफ़ी वीडियोस उन्होंने इसकी जो तारीख थी उसके बारे में बताया कि पहले मेवाड़ ट्राइब जो होता था ये उसका कैपिटल था, फिर किस तरह सारा वो मामला हुए, और जंगों के साथ अकबर जो था मुग़ल बादशाह वगैरह उनका जिक्र दिया है सारा। तो इसकी जो एक हिस्ट्री है पुरानी वो तो है ही है। और मैं पहले बता चुका हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कोई हिस्ट्रीज़ के बारे में नहीं पता, थोड़ा बहुत बस किसी चीज़ के बारे में इल्म होता है तो मैं बता देता हूँ आप। और जहाँ गलत होता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझे कमेंट्स में बता देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उनकी वजह से इल्म में इजाफा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह मज़े की वीडियो सजेस्ट करते रहें, वो इंडियन सीरीज़ पे हों और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पे हों, आप जिस पे चाहें सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिएक्ट ऑन देम। आज नहीं कल, यानी दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बट आई विल मेक श्योर कि मैं रिएक्ट करूं जो आप मुझसे चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लोग ही कम हैं, तो अगर मैं इन लोगों की भी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में?
बाकी आपको ये उदयपुर कैसा लगता है और कौन कौन इस जगह पर जा चुका है, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि उदयपुर के बारे में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है। और मेरी फेवरेट चीज़ों में, सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ सीक्रेट की बात जो है वो खाना भी है, ठीक है। और बहुत यमी खाना लग रहा था, मुझे बाकायदा से भूख लगी है उसको देखकर और दिल कर रहा है, और जब कभी मैं यहाँ पे आया तो मैं ज़रूर खाऊंगा इन चीज़ों को। बाकी मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.